Acha. Hello everyone, I am dietitian Shomendu Ghosh. On behalf of Cognize Nutrition, I welcome you all to the National Nutrition Month. So this year 2021, our theme of this month is feeding smart right from the start. So we have designed a topic that is to tomb, that is from the mother's womb till our last ride. Nutrition is very important for all of us in every stage of our life. We cannot go ahead with nutrition or a proper balanced diet. So I want to introduce all the panelists today for the panel discussion. Today we have Paulomi Ghosh. She is doing her master's in nutrition and she will be discussing on the pregnancy nutrition, few questions, relevant things. Then we have Pritha Bose. She is also doing her master's in nutrition and she will also discuss on the weaning, that is weaning nutrition. Next, we have Shoheli Roy Choudhury. Shoheli will be discussing today on the school-going children or the toddlers, that early childhood. Then we have Suparna Mondal. Shoheli and both Suparna, they are consultant dietitians and diabetes educator as well. They are practicing dietitian and Suparna is doing practicing as a bariatric nutritionist. So she will be talking about the adolescence nutrition. Then we have again Shinjini Rai Choudhury. She is also practicing dietitian and certified diabetes educator. She will be telling us about the young adults or the adulthood. And last but not the least, we have Chandana Dash. She is also doing her master's in nutrition. So we will have some discussion with Chandana regarding the geriatric nutrition or the last phase of our life. So I welcome you all to the platform of discussion, and this discussion will be basically for the public awareness, and we are trying to aware the public. So I request Ms. Suparna to tell something about the National Nutrition Month. Welcome, Suparna. Thank you, sir. Thank you very much. Hello, everyone. I'm Suparna, and thank you, sir, for nicely introducing me. Rashtriya Poshan Ma has started to celebrate. Sorry, Rashtriya Poshan Ma has been started to celebrated by the Ministry of Women and Child Development, Government of India, on 2008 in 2018 under Poshan Abhiyan. This is a overarching scheme of PM Narendra Modi. Through this month-long celebration, our government intend to aware public about the importance of nutrition and proper diet. Uh, there is a very much high rate of malnutrition in our country. Not only in our country, over the all over the world, we find some severely malnourished children, and malnutrition rate is very much high in suburban and urban regions also. So through this month-long activities, government try to educate people about the importance of nutrition and proper diet, so that we can eradicate malnutrition and make a healthy society. This year's theme is the feeding smart right from start, which means if you start feeding in a right way from the start, that includes 270 days of pregnancy and 2 years of life. That means the 1,000 days of life. These are the crucial 1,000 days, which denotes the future of the baby. So through this activity, our government intend to educate people about the nutrition which is needed to develop a baby's health as well as his mental health also. So uh, I'm So I don't know what to thank you, say more. Suparna. Yes, Yeah, this is a very thank much you. interesting topic, and today's topic is also interesting and depends on the theme of this year. That nutrition from womb to tomb. That means before birth, during pregnancy, till our death, nutrition is a lifelong process to build immunity as well as mental and physical health also. Thank you, sir. Thank you so much, Suparna, for giving a brief about the Nutrition Month.
and it is very important to know about the nutrition, and this is a very relevant topic that we should start the nutrition from the very beginning of our life, and it is from the mother's womb. So this awareness is very much needed, and we as a nutritionist or dietitian need to aware the society regarding this importance of nutrition. So I am coming to our first panelist, Ms. Paulami Ghosh. Paulami, are you there with us? Can you have, you need to, Yes, sir. yeah. So Paulami, my first question to you is, there is a conception that we have to eat for two, the mother, the pregnant mother, they have to eat for two. So what do you say about this? First of all, thanks for a warm welcome, sir. And the question that you have asked is totally a myth going on different houses. Especially what happens is the pregnant women don't know. The family members, they are the one who says you have to eat for two now as you have a baby in the womb. But there is nothing so called you have to eat for two now. Whereas you have to take a balanced diet during the pregnancy period. And in the first trimester, it is seen that the pregnant woman should be take the common diet or the common food she is taking in her daily life before she is pregnant. And later in the second and the third trimester, she is told to take more calories and other micronutrients in her diet so that a proper growth is there in the fetus. জেনারেলি আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে অনেক সময় শাশুড়ি মা বা অনেক সময় হয়তো বাড়ির কোনো বড়রা তাকে বলছে তুমি এখন এতটা ভাত খাচ্ছ, তুমি আরো বেশি করে খাও, তুমি একটা ডিম খাচ্ছ আর আরেকটা ডিম খাও। তো এইটা আমাদের যেটা চলছে এটা কিন্তু খুবই রং। কেন কি এইটা কিন্তু যদি আমরা মানে আগে যদি দেখতে চাই ফিউচার রান হতে পারে সেই পার্সনটা সেই মাদারটা ওবিজ হয়ে যেতে পারে। তো এটা সবসময় তাকে গাইড করা উচিত বাই দ্য ডক্টর, We need বাই to দ্য guide ডায়েটিশিয়ান। them. এক্স্যাক্টলি, Right, we should right. We need to always guide them. guide her কি না এইটা তো একদমই করা উচিত না। we shouldn't tell her to take double, but quality matters। কি খাচ্ছে সেটা ম্যাটার করছে, That is কতটা quality. খাচ্ছে না সেটা ম্যাটার করছে না। যতটা ওর জন্য দরকার ওই সময়ের জন্য ততটা যেন খায়। আর ইভেন মানে ও কি ডেইলি প্রসেসে লাইফস্টাইল লিড করছে সেটার উপরেও ডিপেন্ড করে, ও স্টার্টিং ওয়েট কিরকম সেটার উপরেও ডিপেন্ড করে। অনেক কিছু ক্রাইটেরিয়া মিলিয়ে কিন্তু আমরা দেখবো যে সেই মায়ের জন্য আমরা কতটা কিরকম দেবো কি দেবো না। Thank you so Yes, much, sir. Paulami. We have we got the insight, and hope the mothers and the family member will also understand this importance, that not to give the total amount for two. So if someone is taking two chapatis, we cannot force them to take four chapatis. So Exactly. carbohydrate is not important. We need to focus on the micronutrients, as well as protein is very important from the second trimester, and also we have to give importance of in the lactation for the mother. So now, next I am coming to Preetha Bose, our next panelist. That is Yes, the sir. next phase of our life, that is during lactation. So we know, Yes. Preetha, that the first 6 months of the baby should be fed with the mother's milk. So I have a question, that does diet affects the quality of the mother's milk, or the formula milk is more beneficial for this to give proper nutrition? So what will be your say regarding this Hmm. importance of mother's milk and the diet enhancing the quality of mother's milk? Okay. First of all, thank you, sir, for inviting me, and good evening to all the other panelists. So, coming to the question, the quality of the breast milk somewhat depends on the diet, not directly, but it somewhat depends on it. Like, for example, if the mother's fluid and calorie intake is proper, then her milk quality is not compromised. But if she is not eating well, not maintaining a proper diet, then the composition of the milk does not changes, but the quality and the quantity gets affected. For example, अगर हम लोग like take an example of a cow. जो cows रोड पे घूमते हैं, and there are these cows who are kept by the milkmen, like they are given proper feeding and उन लोग को सही से खाना दिया जाता है, they are in a proper state, whereas जो गाय रास्ते में घूमती है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी घूम रहे हैं, मिल्क तो दोनों में प्रोड्यूस होगा, लेकिन दोनों के मिल्क का क्वालिटी में बहुत अंतर रहेगा.
So that is what is applied in this case also. If a mother is not eating well, not taking proper rest, and her lifestyle quality is very poor, then gradually her milk will get affected, and ultimately it will affect the infant's lifestyle and upbringing also. So coming to the diet of a breastfeeding mother, I would say that she has to maintain a proper diet. In There's one thing common in between the nutrition fraternity and the textile industry, is that one size does not fit all, and it's same for in this case also. Every mother, I think they should take a consultation with a dietitian to get a proper diet chart, because सबका lifestyle, सबके preferences अलग होते हैं. So they should visit dietitians for their diet chart, and they can take galactogogues, we say, which increases the milk production, like garlic, milk, and there are many other things, sabu, etc. These can be taken by them, and enough fluid should be taken. Calorie intake should be proper, rather more than what is required, because milk जो बन रहा है वो जो मदर खा रही है उससे नहीं बन रहा है. The milk is getting prepared by the nutritional stores of the mother, so she has to maintain her nutrition first, to in order to feed the child properly. So that is what I got to say in this topic. So fantastic. You have said, you have given an in-depth knowledge, and you have used some local language, that is Hindi is more preferable, and we can ask our panelists to sometimes use Bengali as an example, or Hindi, so that as we are making this video for these common people, so this is a very, some examples can be cited in our this language. So thank you so much, Pritha. Next, I am coming to our next panelist, that is Sohaili Rai Chaudhary. Sohaili, good evening. Good evening, sir. Sohaili, I will request you to say the more of the things in English, but you can give some examples also in Bengali, so it will be very soothing for the audience. Okay. So Sohaili, my question is, it is a very common question for the mother, that why my child is very much susceptible to infection. मेरे बच्चे को इतना ज्यादा फीवर, कोल्ड एंड काफ एंड ये प्रॉब्लम क्यों रहता है? सो व्हाट विल यू से, इज देयर एनी लिंक बिटवीन इनफेक्शन, নিউট্রিশন এন্ড গ্রোথ? এই তিনটের মধ্যে কি কোনো রিলেশন আছে? সো ক্যান ইউ গিভ এন ইনসাইট অ্যাবাউট দিস থিং? Okay, this is a very relevant question you have asked me. Definitely, there is a specific link between nutrition, growth and infection. আমরা যখন কোনো বাচ্চাকে নিয়ে মায়েরা যখন ক্লিনিকে যায় না, তো তখন দেখা গেল একটা বাচ্চা হাঁচি দিল, তো বাকি যে দুজন বাচ্চা থাকে তা দেখা গেল একজন বাচ্চার কোনো এফেক্টই হলো না, কিন্তু আরেকজন যে বাচ্চা আছে ইনস্ট্যান্ট সে এফেক্টেড হলো। এটার কারণই হচ্ছে যে লো ইমিউনিটি, যেটার ফলে আমাদের ইনফেকশাস ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে, রোগ প্রবণতাটা বেশি থাকে। তো এটার কারণটা হচ্ছে লো ইমিউনিটির জন্য। So there is a link between nutrition, growth and infection, and when we do not provide our child proper nutrition, they will be malnourished and their immunity power will be low and they are more susceptible to infectious diseases. So when they are more susceptible to infectious diseases. They are susceptible to infection, and obviously, Sohaili, what you are saying, their appetite will be lower, they will be anorexic, they will not eat the food properly. So there is always a link between all the things. There is always a link, and the infectious diseases are very common, like cold, cough, fever, and once a child is suffering, they cannot take food in an adequate amount. So their immunity power will be low again. That means you are saying they are lacking the nutrition. If they are not taking the nutrition properly, not taking the food in right amount, then they are obviously lacking nutrition. So there is always a link. Yes, you continue. And okay, thank you, sir. And this cycle is called vicious cycle. So if we do not proper diet or proper nutrition to the child, the vicious cycle will be continued. Proper nutrition is very important in growing age. Very important in growing age.
that's all you have to say. Thank you, Yes, sir. Sohaili. So you have nicely explained. So there, I want to just give an example to the mothers that there is always a link between the infection, nutrition, and growth. So mother do not Yes. understand that how infection can impair the growth. So Yes. Sohaili has given a very good example যে যদি আমার ইনফেকশনস হচ্ছে সো আমার বাচ্চা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে তার মানে ইনফেকশনটা কিসের থেকে হচ্ছে ইনফেকশন ইজ হ্যাপেনিং বিকজ অফ দ্য লো ইমিউনিটি Low so immunity. you need to give the right amount of food in the right proportion, and right quality of food is very important. So if you are giving Yes. right quality of food, immunity can be enhanced. There is রোগ প্রবণতাটা কমে যাবে অনেক। and there is two type of, one is innate immunity and that is acquired immunity, যেটা আমরা Yes. environment থেকে acquired করি and from the food also. So we can indirectly acquire the immunity, and if the immunity is enhanced, then obviously the chance of infection will be lowered. And once the child is suffering from infection, and if the immunity is low, Sohaili, then the child will suffer for a prolonged time. মানে Yes. ইমিউনিটিটা কম থাকলে জ্বরটা সর্দি কাশিটা সারতে চাইবে না, ইট উইল বি ফর এ লং টাইম। জাদা দিন তখন রুচি থাকবে না, ইয়েস, মুখে রুচি থাকবে না, তখন খেতে পারবে না, দেন আবার এই সাইকেলটা রিস্টার্ট হলো, খেতে পারবে না, সো আবার তারপরে আবার ইমিউনিটি পাওয়ার লো হচ্ছে, আবার ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। So to stop this cycle, we have to I will come to you again in the next phase. I will come to you because you are saying it is a very interesting topic for all of us. Yes. So this is very important. So next, thank you, Shaili. Next, I am coming to Thank you, sir. our next panelist, that is Shupana Mondal. Shupana, are you present? Present? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. Shupana. Yeah, Shupana. So my question to you is about the adolescence, that is after childhood, the next phase, that is 10, 12 years to 18 years. This phase is very important. Many changes happens in the body as well as the mind of the children, and where the nutrition need also increases. So can you throw some light on this topic? Yes, sir. This is again a very interesting topic, and thank you for asking me this question. Adolescence. The word adolescence has came from a Latin word adolescere, which means to grow up to maturity. So in this crucial phase of life, the children is developing like their not only physical development, শুধুমাত্র তাদের ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয় সেটাই নয়, তাদের ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট তো হয়ই, সেখানে হরমোনাল চেঞ্জেস হয়। তাদের প্রথমেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা গ্রোথ স্পার্ট হয়, যেখানে তাদের হঠাৎ করে লেংথ মানে হাইট যেটা সেটা ডেভেলপ করে, অ্যান্ড বোন ডেভেলপমেন্ট হয়, মাসেল ডেভেলপমেন্ট হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট বাড়তে থাকে, ছেলেদের ক্ষেত্রে মাসেল অ্যান্ড বোন ডেভেলপমেন্ট মেয়েদের থেকে একটু বেশি হয়, কিন্তু দুজনেরই হয়। অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস দুজনেরই নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট বাড়তে থাকে। এখানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার একটা চান্সেস থাকে, কারণ প্রথম মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলস ইন্ট্রোডিউস। Yes, iron deficiency is very common. হ্যাঁ, এখানে অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস এর ক্ষেত্রে আয়রন এর একটা ব্যাপার থাকে, আয়রন ফলিক অ্যাসিডের। এবং পিউবার্টাল স্টেজে শুধুমাত্র যে মেটাবলিজম হাইক হয় সেটাই নয়, সাথে যেহেতু হরমোনাল চেঞ্জেস হয় বডিতে, ইন দ্যাট কেস তাদের মেন্টাল চেঞ্জেস আসতে থাকে, লাইক সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়, তাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়, তারা বাচ্চাদের মতন নয়, তাদের সাথে বন্ধুর মতন মিশতে হয়, আদারওয়াইজ তাদের অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন এগুলো আমরা বুঝতে পারবো না। তো তারপর থাকে হেলথ কনসিয়াসনেস বা ফিগার কনসিয়াসনেস আমি যদি বলি, তো সেই So ক্ষেত্রে as you are saying that mainly the girls, they হ্যাঁ। are very much conscious about the figure, so they Yes. cut down on their calories and they are on their calories on their going own. for the zero figures, whereas Yes. the guys or the males, they are very much conscious to develop their muscles and all these types of things. Yes. And they are getting trapped into the gym. Gym. That is the gym personalities, that they are giving them some diets which is very Yes. high in protein, some Yes. whey proteins they are taking. So I have many In that patients. case, they are neglecting carbs and carb-rich food like Yes, fruits. carb Most is of the very much fruits, important. vegetables, Vegetables they are not taking. cereals are totally excluded. That also causes a risk of having micronutrient deficiencies. Deficiency, right. So only the protein is not our concern. So in And that case, these people are more prone to taking this protein and protein yes, whey supplements, protein is but they a don't golden know. Yes. coin to them.
Coin to them, yes, and they are taking more of this kind of protein, but ultimately they are not taking balanced diet. And this phase, in this phase, for example, the child is 14, 15, 16, or 17 years, so growth is Also still, there is a junk food there, growth is so still happening. এখন যে ডেলিভারি And অপশনস গুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে yes, খুব yes, kindly অ্যাভেলেবল। throw some light on that, that people are এখন very তো much prone একটা to নতুন, that easy available of food stuff. So ইয়েস, give আর some এই মুহূর্তে examples তো of. কোভিড প্যান্ডেমিকের জন্য মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে, তো তাদের খেলাধুলা, বাইরে বেরোনো, বাকিদের সাথে মেশা, এই যে আমাদের ইন্টারাকশনস গুলো, এগুলো লিমিটেড হয়ে গেছে। ইন দ্যাট কেস কি হচ্ছে, তারা প্রথমত বাড়িতে বসে রয়েছে, তাদের স্ক্রিন টাইম ইনক্রিজ করেছে, কারণ এখন অনলাইনে ক্লাসেস হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তো আছে, প্লাস As আমাদের many স্ক্রিন টাইম people are একটা প্রবলেম। listening, you just tell in mostly in English and a few Yes. things in Hindi. Yes, And yes, sure, sir. The screen time has increased because of online classes and so on. Moreover, indoors, like they are mostly trapped indoors, so they cannot go outside like before the pandemic situation. So there is a restrictions in body movements and physical activities also. And after childhood, there is a change in taste also, like they want to try more things, like we restrict children from eating some things, like this is bad for you, do not eat, but we cannot restrict adolescent or teenagers from eating outside foods, or we cannot restrict them that kind of thing, like they are no more children. So in that case they tend to be like, we will eat junk foods, we will eat Swiggy, we will use Zomato, and these are so much available. These are causing adolescents obesity also, and PCOD patients are getting fatter, and boys are also getting fatter, like there is a chaos in the system, because during the pandemic situation, firstly the physical activity is restricted, and moreover the screen time has been increased, and the change, we need time to cope up with that. So in that case the food choice should be wise enough, like if we include children in choosing their food and making that, we can motivate them to have healthy and tasty. We can teach them how to make tasty foods and how to choose, like what is a good option. We can counsel them in a friendly way. So the restriction is not only the way, but during puberty there are many changes happening in their life. So we should be friendly to them in that case. again we will come with some relevant question with you. And thank you so much, Thank you. Suparna, very important topic. And the Thank adolescent, this age group, the puberty, these people are developing depression when they are not meeting their expectation. They have the suicidal tendency also. very So much, very high. आपको फर्स्ट होना है क्लास में, आपको ये इसमें जाना है, आपको कराटे में भी करना है, आपको क्रिकेट में भी जाना है, आपको You have सिंगिंग to भी crack करना this है. exam. You have So to crack that yes, tournament. Like and there are targets. one example you have given, that we have to, the mothers or the father, the parents should be very friendly with them. Agar friendly nahi hoga to there is a problem with them. So at least once in a day we should listen to our child, that what they want Yes. to say. We should And be very intimate. the kid is no more a child. Yes, It's going because towards they are maturity. now they So are we should give struggling. them respect also. Now they are struggling with their mental and as well as physical Physical development. changes. So Yes. this transition time, we need to take care of them. Otherwise, they will go in some different Wrong track, directions. wrong Yes. direction. Yes. Thank you, Suparna. Thank Thanks you, a sir. lot. So now my next panelist is Shinjini Rajchaudhary. Can we have Shinjini, please? Shinjini, yeah. Thank you, Yes, Shinjini. sir. Yes, Good evening, most all. welcome to the platform, and nice to have you. So again, we have the next phase of our life, that is the adulthood. So I want to ask you the question that our life is more or less sedentary nowadays. We are sitting, and after this pandemic, again, it has become more sedentary. So the people are developing lifestyle diseases, and they are unaware of this silent killer. So some are very much reluctant about this, that they are becoming obese, but still they are very reluctant. And some are becoming excessively worried যে মুঝে क्या हो गया, আমার কি হয়ে গেল, আমি কি করে নিজেকে ঠিক রাখবো. Exactly. So can you please throw some light in this phase of life, that what to do? Exactly. That is the as important as the childhood, as important as adolescent. This is the phase. This is the busiest phase actually among the total lifespan. But
Yeah, I want to thank you, sir, for choosing me as the panelist in this discussion again. So, okay, whatever you have asked, I just want to answer that when you start discuss about the adulthood, there is actually a must come issue, that is sedentary lifestyle, especially in during pandemic. And it was actually from previous age of pandemic, and it will be. But we are actually trying to take them out from their sedentary lifestyle, because sedentary lifestyle is the everybody will be uh, agree that sedentary lifestyle is actually the root cause of many kind of lifestyle diseases, like hypertension, like type 2 diabetes mellitus, like obesity, because obesity is itself nowadays becoming the most dangerous diseases, which is actually become People the do not result of. understand. People do not understand, and when Yes, the people are growing obese, they do not think that it is a disease. But World Health yes, Organization (WHO) said that obesity itself is a disease. So when yes, our sir. BMI is going above 23, we should cut down, or we should check on our weight. This is very important. So next, you will just highlight something, some of the important tests or some of the important awareness before going to diet. If you can highlight to us that what a adult people should do, And adult people have to do some because taste, like, because these disease lifestyle diseases like diabetes, hypertension, cardiovascular disease, dot these are not coming in the late ages. We yes, in our childhood used to say that আমাদের বাবাদের ক্ষেত্রে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে, এইগুলো দাদুদের ক্ষেত্রে এটা হতো hmm, যে it hmm, happens with the senior people, but yes, and still this concept is among the adult young adults যে মুঝে কুছ নেই হো সকতা, আমার কিছু হবে না, আমি তো এখন ইয়ং, আমি তো সবকিছু খেতে পারি, I can have everything, I can have street food, I can have yes, junk food. So yes. what you will say See, about these young adults, the sedentary young adults? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাবাদের ক্ষেত্রে বা দাদুদের ক্ষেত্রে তারা কেন দেখতে পেত, বিকজ তখন টেস্টটা করা হতো যখন তারা অসুবিধা ফিল করতো, when they are facing problems, they are going to doctor or the healthcare provider, and they are actually being prescribed Right, some right. tests, Hmm. and after that the disease is actually diagnosed. But Yes, if we can taste it in earlier age, from the earlier age, if we are known about the taste, what I have to do, like fasting blood sugar for diabetes, like HbA1c, which actually give the 3 month span the total average glucose in their blood, like hypertension means blood pressure যদি প্রতি সপ্তাহে মাপা হয়, যে তাহলে তার যে রেজাল্টটা, তারপর কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, যে তার অ্যানিমিয়া আছে কিনা বা অন্য কিছু ডেভেলপ করছে কিনা, এই ধরনের যে টেস্ট গুলো, বা একটু লিভার ফাংশন টেস্ট যদি করে নেওয়া যায়, লিপিড প্রোফাইল টেস্ট, এইগুলো যদি ইয়ারলি বা 6 মান্থস মানে হাফ ইয়ারলি যদি করে নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু ডিজিজ গুলোকে এট দ্য আর্লি এজ ট্র্যাক করা সম্ভব হবে। আর যতটা আর্লি এজে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে, ততটা আর্লি এজে জিনিসটার আমরা যখন জিনিসটার মানে কন্ট্রোল মেজার নিতে পারবো, তাহলে কিন্তু জিনিসটার সাথে কোপ আপ করা অনেক ইজি হবে। এটা আমি I মেনলি completely, সাজেশনটা I দিতে চাই। completely, 100% I agree with you. I 100% agree with you. I completely agree with you in this thing, because this is very important to know for all of us that early measures, that is prevention, is always better than cure. So we know a ডেফিনেটলি, term that ডেফিনেটলি, is IGT, impaired glucose tolerance. So ইয়েস, once you are এক্স্যাক্টলি, diabetic, you will be throughout the life diabetes. But once you are impaired glucose tolerance, थोड़ा बढ़ गया है sugar, so उसको हम control कर सकते with the help of diet and exercise. Same as hypertension. Shinjini has knocked the door. That is, you have said a very right thing, that these are all are silent killer. So हमारे ইয়েস, पूर्वजों में जो सीनियर्स में होते थे, सो कुछ ऑपरेशन के पहले या कुछ चीज के पहले या कुछ सिम्टम्स देते थे. आजकल का डिजीज लाइक फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, and for the young people it will not give any symptoms, so they are feeling that I am okay, I do not have any problem. actually And maybe sir, maybe it gives some symptoms, but in their busy schedule they cannot recognize the symptom. Sometimes it happen also, sometimes because of their even I stress, seen, because of I their have seen, busy schedule. right, yes, they cannot give the time. So I will again come to you in the next phase of our discussion.
So with few others question. So thank you for highlighting this all the things that, so I think the people should keep in mind to do some important tests that are very important. And in the next phase, Shinjini will highlight us about the how to take care, how to manage their lifestyle. So next we are moving to the next phase of our life. That is the last phase we call as after retirement or the geriatric age. So we have Chandana Das. So Chandana, welcome to the platform. And I want to ask you a very relevant question. I think it should be very relevant. That is, what is Yes. the nutritional need for the geriatric population, and what are the main reason behind depression in the older people? Because in the adolescence, nicely highlighted by Shupana, that same, they again in the later phase they become child. এরা আবার এই বয়স্ক মানুষরা বাচ্চাদের মতো হয়ে যায়, and they are Yes. developing depression. So why they are developing depression? And my first question is there any extra need for nutrition, or what are the nutrition you would focus for this kind of people? Yeah. Thank you, sir. Thank you for this warm welcome. And as you say that about geriatric nutrition, so at the last phase of our life, as we all know, that our body composition change with our age, and nutritional needs are totally depend on that. So it will be changed. एंड फॉर द लेस एक्टिविटी, क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा काम नहीं करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट हम घर पे ही बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, बट ज्यादातर लोग ज्यादा काम नहीं करते उस टाइम, सो दे नीड लेस कैलोरी। ओके, बट लोगों को ये मानना है कि उस टाइम हमें लेस न्यूट्रिएंट चाहिए, कम चाहिए न्यूट्रिएंट, कम चाहिए प्रोटीन, कम चाहिए हमको हमको विटामिन कम चाहिए, बट ऐसे कोई बात नहीं है। यस, दे नीड लेस कैलोरी, but they need good amount of protein. Due to muscle loss, they need good amount of protein, not high protein, but 1 gram per kg body weight protein is adequate for them. And some elder people are lactose intolerant, some people, so they can take curd, if possible they can make lassi, chas also. This will be helpful for them. And also in market lactose free protein powder is also available. So अगर उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको परमिशन दे दिया उसको यूज करने के लिए, so they can take it. And for fat, I think they should restrict their fat. ऐसे भी मानना है कुछ लोगों को जो मतलब ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस पीपल जो ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है, उसका ऐसा मानना है कि आफ्टर द मतलब ये लास्ट फेज है हमारे लाइफ के, तो हम जितना चाहे मर्जी फैट ले लें, अगर थोड़ा वेट गेन भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर फैट लेवल एट दैट मोमेंट, avoid mainly the saturated fat. not only fat, there is some tendency that maybe out of depression, और बोलते हैं जो मेरा तो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, या the Yes. person is already diabetic मगर छुप छुप के मिठाई खाना या ये सब टेंडेंसी, Yes, yes. बिकॉज तो वो तो क्रॉनिक मैंने डिजीज बच्चों के लिए जैसा होता हो ही है। जाते हैं, बच्चों जैसा हो जाता है जब Yes. स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे आप अगर आपके बच्चे को भी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करोगे तो ज्यादा जिद्दी हो जाता है, so the Yes. child is going out of control. Same is Yes, I happening with will the say adult. that. Yes, Yes, yes. yes, Can you please highlight that? yes. अवॉइड, हाँ, इसलिए भी हो सकता है, तो मैं कहूंगी कि उस टाइम सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए, लाइक बटर, चीज, which is very common, and mayonnaise also. And I think for nutritional requirement, आप सब एग्री करेंगे मेरे साथ, they need mostly fiber rich diet. So many most Constipation is very common common. They yes, are yes, inactive, so constipation constipation, is very common, and IBS. they all have some lifestyle disorder, maybe hypertension, maybe cardiovascular, maybe diabetic. Yes, So dietary fiber, as you are saying, fiber, plays a very important role. So can you say some very source of important. dietary fiber and how they should take? Yes, yes, dietary fiber. Actually, people in my family, I also told that I have been seen a lot of older people loves to eat puffed rice, muri in West Bengal. So they think that ये अगर टाइम पास के लिए भी वो खाते हैं ये सब, but for fiber, I can prefer khoi because khoi is the fiber rich food We call instead of this puffed puffed rice. rice. Yes.
Yes, they can, and it's Along with also that, traditional. always puff rice or vel, you can always suggest with chana, chola, moong, and Chola, yes, salads. So, and also yes. pop rice have वो some टेस्ट भी fibers. बढ़ाते हैं Yes, और वो yes. खाने के लिए भी अच्छा है, तो वो भी खा सकते हैं लोग, और ये So, फाइबर भी प्रोड्यूस देगा right. अच्छे In से। a nutshell, my first हम्म, question's answer is you are suggesting a balanced diet. प्रोटीन उतना yes, भी of ज्यादा नहीं course, है, मगर 1 ग्राम पर केजी IBW protein, ideal body weight yes, protein can be given, and these they cannot, any patient cannot find out that किस में कितना protein है, so they must go to a dietitian and they must take obviously, a diet chart. So in yes, once in a lifestyle, at least you don't have a disease, but visit a dietitian. Go for a checkup to a yes. dietitians, and you can. That is most important, Very and important. People do not yes, understand the importance of a nutritionist or dietitians. They are going to the doctor, they are doing so many tests, but they are not going to the dietitian. So they are monitoring their own diet. अरे डायबिटीज हुआ है तो मिट्टी and के help, नीचे वाला चीज नहीं and खाएंगे, ये हो yes, जाएगा। और वो नेबर से भी हेल्प ले लेते हैं कभी कभी, नेबर से हेल्प क्योंकि लेते हैं। So हाँ, why you are you उसको so लगता है, this discussion, today's discussion is very important for all of us, those who are listening us today. So yes, very important because you need to give important to nutrition, and you need to give important to a nutritionist also in the society, so that then they can help you, they can guide you, because you are saying 1 gram per kg body weight protein, they don't know how much protein to take to meet up that 1 gram per kg yes, body yes, weight yes, protein. So this is very important. Another thing you said about fiber, so they can have lots of vegetables, fruits, they can have whole wheat atta, dalia, and all this. They can yes, reduce the maida. If they have lactose intolerance, so they should avoid directly milk, and they have the symptoms of constipation, flatulence, bloating, gas, so they should avoid milk, and they should have curd and chena. That will give calcium and all the things. And they should yes, be little bit physically active, go outside, go to the yes, sunlight. They need also vitamin D. So because these people are more prone to fractures. These people are more prone to more fractures when they fertile then. fell down, so they get fractures because the calcium absorption is not done because of the lack of vitamin D. So this is very important. And can you just say about the depression part, why they are getting very much Yes, yes, of depression? course. What And necessary measures we should take to check their depression? যে ডিপ্রেশন কো कैसे रोक सकते, কিভাবে আমরা ডিপ্রেশনকে কমাতে পারি, বা আমরা কিভাবে ওনাদেরকে গাইড করতে পারি যে ওনারা স্ট্রেস বা টেনশনটাকে একটু কমাতে পারে? তো ক্যান ইউ প্লিজ সে yes, অ্যাবাউট দিস? yes. And other most important thing that they should keep them hydrated, because dehydration at that moment is will be very dangerous for them. So hydration part is very important. And yes, depression after retirement. So some people find themselves alone because their children may not be with them, और अगर साथ भी रहते हैं तो अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए उनके पास बातें करने के लिए ज्यादा लोग नहीं रहते हैं ना, क्योंकि उस टाइम काम नहीं है उनके पास। सो they will be lesser friend, as there will be lesser friends, so they will have more free time, and they will think that their life will end like this, as इसके लिए वो डिप्रेशन में कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं, ये तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है वेरी डिप्रेशन। कॉमन। Yes, and also they can't accept the present scenario. They thought about their early life, and they miss their workplace. इसके लिए भी उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो at that moment, I think family member should contribute the most important role. They वेरी have to नाइस, find वेरी नाइस। time for their parents or grandparents, जो भी है घर पे हमारे, जो भी उसके है, लिए हमें यस, टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट टाइम देना मतलब 1 आवर टाइम या 2 1 घंटा उसकी आवर, बातें नॉट सुनना। रूटीनली नहीं, बट ओके, आपको दिन में 1 बार 2 बार, जितना बार चाहे आप, जितना बार आपको टाइम मिले, तो यू शुड टॉक विद देम। टॉक विद या देम खाना खाने मतलब के भी समय गिव भी टाइम, एक साथ ईटिंग बैठो, टुगेदर, यस, ईटिंग एक साथ टुगेदर। खाना खाओ, आपके होल डे एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करो, तो उनसे भी कुछ सजेशन रिक्वेस्ट मतलब And मांग लो, one more सजेशन। thing, Chandan, I want to add that maybe यस, we will also say this message. We will give percolate this message that we should give time to the aged person, as well as they should be engaged in some work, maybe यस, स्मॉल professionally. वर्क लाइक, They can do हाँ, tuitioning, that is private tuitioning, गार्डनिंग, gardening, बच्चे को पीलिंग पढ़ाना, वेजिटेबल्स, गार्डनिंग, ये यस, सब कर peeling of सकते हैं। vegetables, घर में पानी भरना, कुछ एंगेज तो उनको भी एंगेज मतलब अच्छा एंगेज लगेगा कि या हम भी पेट इम्पोर्टेंट पेट है घर को के लिए। पेट को लेके बाहर जाना। सो दीज आर द हम्म, थिंग्स
they need to engage, and otherwise this is our responsibility as a son and daughter to Yes, that is yes. the most important thing we have to remember. So Yes. thank you, Chandana. And We will to thank the you. yes. We will again come to you. So Okay, again, okay. we will come to and discuss of the geriatric parts. And again, I am going to Paulomi Ghosh, Thank you, and sir. thank you. So Paulomi mostly try to give answer the English and Hindi so people will understand rather than Bengali. Sure, But sir. we can, as we are doing this program in West Bengal, so obviously keep some tips in Bengalis also, and we are planning to do a separate program that is will be fully in Bengali, so that will be for our state. And this I think will help. So this in this conversation will be mostly in English and Hindi. So Okay. okay. So the my next question to Paulomi is pregnant mother. दो क्वेश्चन मेरे साथ एक साथ है, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दैट प्रेग्नेंट मदर किसी किसी घर में होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में डोंट टेक नॉन वेज लाइक फिश मीट चिकन, you cannot take. And my second question is, if I am a vegetarian, because 70% of the Indian population are vegetarian, so North Indian populations, the Gujarat or this Western population, and in some South Indian populations are vegetarian. So if they are totally vegetarian, so will they get sufficient amount of quality protein? So what will be your say to this? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिटा जो फर्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा है हम उसका पहले आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटीन तो उसको चाहिए, पर दिस इज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन, द मीट, द फिशेस, द एग्स, these are the first class proteins, so we should always say the mothers to take it rather than hearing from other elder person to not to take it, or rather than taking their take on it, you should always take those things because these are the first class protein. इससे क्या होगा, there will be a rapid growth in the fetus, एंड ये ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा ताकि आपके जो स्टोरेज है, आपके जो प्रोटीन स्टोर है, अगर आप वही नहीं खा रहे हो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन आप नहीं ले रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपका लॉन्ग रन में आपके जो बच्चे है जो आपके वूम में है उसको फिर कहाँ से उसको प्रोटीन मिलेगा, बिकॉज इवन दैट पर्सन, दैट बेबी ऑल्सो नीड टू ग्रो, सो उसको अगर चाहिए प्रोटीन तो वो तो कहीं से लेगा। अगर जो मदर है वही सही से नहीं खा रही है, वो सही से प्रोटीन्स नहीं मैच अप कर रही है, डजंट टेकिंग एनफ प्रोटीन, सो क्या होगा, उसके जो स्टोरेज है वो ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा, एंड वही से जो बेबी है दैट इज गोइंग टू टेक द मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, so which will be very much harmful for the mother also in the long run, that mother might become बहुत वो thin हो जाएगी, हो सकता है even can't even able to carry the or hold the baby. So it is very much required to see the amount of protein. In the Indian culture, it is generally RDA 2020 says that to take a protein of 45.7 gram per kg for an ideal weight of 55 kg weight, but in the second and the third trimester, it is generally 9.5 gram. More should be given in the second and 22 in the third trimester. And then जो second आपने question पूछा है, that is the 70% of the people staying in the India, they are taking veg foods or they are not taking this non-veg foods like South Indians हो गए या फिर North Indians हो गए, उनके लिए मैं कहूँगी कि they should always go for other sources, other source of the first class protein, that is your dairy products आपके हैं, जो आप छेना खा सकते हैं, मिल्क खा सकते हैं, It so is coming from the वहाँ से animal, so it is also yeah, a obviously it is going to help, and help. क्योंकि ये जो है यहाँ से And हमको आपका हीम calcium आयरन के लिए भी भी मीट अच्छा अप है, हो जाएगा, हाँ because कैल्शियम calcium भी requirement also एग्जैक्टली, increases during pregnancy. Pregnancy के हाँ time में calcium ज़्यादा लगते हैं, तो हम अगर dairy product we can increase in the form of curd, in the form of paneer, in low fat paneer. If the patient is have some problem, we can suggest also low fat paneer, and also in a different way you can give chena. So different types of dairy products can be given. And can you हाँ, suggest some veg protein that having the high biological value? सोयाबीन यू कैन टेक, Soybean, yes, सोयाबीन इज अ yes, गुड ऑप्शन, soybean is a वो good आप option. विथ लाइक आप विथ राइस और रोटी अगर आप खा रहे हो उसके साथ आप ले सकते हो, या And फिर आप सुबह we में get स्नैक्स, this if we combine, that is we say as खिचड़ी, जो हाँ दो हाँ हाँ, टाइप का खिचड़ी अमाइनो की एसिड टाइप मिल के भी, जाता है, तो एग्जैक्टली, चावल के साथ दाल जब मिक्स्ड होता है या हाँ रोटी हाँ के साथ हाँ, दाल जब मिक्स्ड होता है, so we get the complete protein.
So in this Exactly. way also we can just tell them to have this हाँ, वही complete. हम लोग को हमेशा देखना चाहिए कि हम लोग के पास क्या क्वालिटी है, हम लोग के पास हम लोग कहाँ से उसको अच्छे से अच्छे खाना दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी राइट स्टेज ऑफ द मदर, वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटीन इन दिस स्टेज, बिकॉज यहाँ से तो जो बच्चा है उसकी भी तो डेवलपमेंट हो रही है, उसकी बोन डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है। अगर वही प्रॉपर नहीं होगा तो लॉन्ग रन में मतलब हो सकता है कि वहां पर वो मदर या फिर मैलनरिश्ड हो जाए इन द लॉन्ग रन, या फिर वो बेबी इज नॉट प्रॉपरली वेट और समथिंग, लो बर्थ वेट बेबी भी हो सकता है एट दैट टाइम। सो इट इज हम लोग की है एज अ dietitian, as doctors, always should work together here and should guide the mother rather than hearing the things from other person। वो दूसरे लोग मुझे क्या बोले कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बल्कि हम लोगों को एक हेल्थ जो एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स है उन लोगों के पास जाकर हम लोग को कंसल्ट करना चाहिए कि हम लोग को क्या एक्चुअली लेना चाहिए। गूगल में Because it देखकर is या फिर ये common, सब yeah, नहीं है। गूगल बग्स नहीं होना है हमको, यूट्यूब हाँ, नहीं देखना है। प्रेगनेंसी के टाइम में तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होता है, सो हम लोगों को ज्यादा इतना अगर स्ट्रेस भी रहता है। स्ट्रेस रहता है तो जितना हम लोग गूगल यूट्यूब देखेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। सो दैट वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट द मदर एंड दे शुड आल्सो इन दिस फेज वंस और ट्वाइस कम टू ए dietitians and they should take a balanced diet from the dietitians and they that can help them. So thank you, Paulomi, वही, for highlighting this very important topic. And now I am coming थैंक यू to सर। Preetha Bose for again the next phase of her life, that is Yes, sir. weaning. That is weaning is very important. So my question is not weaning, I will come to weaning later, but I will tell about the breastfeeding, because the first 6 months is the breastfeeding, then is the weaning. So breastfeeding में can we give this if अगर बच्चे ये this is mother is having COVID or mother is sick, so can the mother feed the child, breastfeed the child? To begin with, I would say that the transmission of COVID-19 virus from mother's milk to the infant has not been found out yet. So, if a mother is COVID positive, or even if she has HIV positive or any other viral fever or anything, she just has to maintain a proper hygiene, wear a mask, maintain proper hygiene, and she can feed the baby. Breast milk is the best milk. Like it is best suited for an infant, and you should never feed anything else to a baby from 0 to 6 months of age. You should only give the baby just breast milk, nothing else than that. Not water, not honey, not sugar water, nothing else. And if a mother can breastfeed with adequate medication, she should always do that. And if the condition is not good, then the expressed milk can be used. You can use breast pumps and store the milk. Extreme freezing or extreme heating is not recommended. Just keep it in, freeze it, and then bring it to room temperature and then feed the child. That will be more beneficial. And yeah, even if the mom is HIV positive, she can feed the child. She just has to maintain proper hygiene. Apart from this, I would say that don't switch to formula feeding if not required, because that is, yes, always an option, but you should not choose it if it's not an emergency, because formula milk is not always accepted by the child. You can have a lot of problem there, like osmolarity का problem हो सकता है, कभी ज्यादा गाढ़ा हो सकता है, कभी ज्यादा पतला हो सकता है, उसके वजह से डायरिया हो सकता है, बच्चे को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम न्यू है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा उतना जल्दी, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो ऑलवेज चूज ब्रेस्ट मिल्क. इट्स द फर्स्ट ऑप्शन. उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आप लोग डिसाइड करें कि आपको कुछ और में स्विच Obviously, करना the है या नहीं करना. pediatrician is the right person Yes, to decide pediatrician, if you exactly. need to give infant formulas. But always, we as a nutritionist, as per the rule of the WHO, we should promote that breast milk is the best thing. Best milk. And Yes. I want to add one point along with your you have nicely elaborated. You have said everything. sir. There's this doubt. This question is more often coming to us that COVID may
you can breastfeed. So one more thing I want to add, that no cow milk, please. At least WHO is selling not before 2 years, at least not before 1 year. Do not give any cow milk. So cow milk is for the cough. So the child's, these are very sensitive. Digestive system is very sensitive. So don't give any cow milk. So give the mother's milk. And in this time, if the mother have developed COVID during this phase, the mother's nutrition should be taken care, because the mother is not able to even sometimes sit to breastfeed the mother. Breastfeed the child. So it is not necessary to sit and breastfeed. The mother can lie down in the side and can breastfeed the child. There is different techniques we cannot discuss in the short span of time. So there are different techniques of breastfeeding, which we should educate the mother. But the breastfeeding and the mother's nutrition is very much important. Mother it's very much important. Mother Exactly. should be hydrated. Mother should not take too much of coffee, tea, and these types of things. But the mother should have enough fluids. Soup, maybe juice, and drinking water. Sometimes mothers also have this doubt that, like, is my milk enough for the child? Yes. This is a natural process, and nature has made the mother competent enough to feed the baby. Like, the cow's milk is for the calf and the human milk is for a human child. This thing should be clear to human, like for us, कि वो सोचते हैं कि मिल्क तो है, वो काउस मिल्क फीड कर देंगे सेम ही चलता है, लेकिन वैसा नहीं है. ह्यूमन मिल्क ह्यूमन बेबी के लिए ही एडिक्वेट है. उसमें जितना अमाउंट्स में सारा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बेबी टू ग्रो अप, these things are adequate in a human milk only, and which will be maybe deficient in cow milk, or balance bigad sakta hai. So these things should be taken care of. Yeah, very, very nicely explained this, and in a very simple manner you have explained all you have cleared our doubts. So next I'm again moving to the toddlers and that is the young children. So Shaheli is with us. So Shaheli, how to bring interest in the child's food plate, because nowadays mothers are very much worried कि मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, आपका डाइट चार्ट लेके क्या करूं? आपने तो बहुत लंबा एक लिस्ट दे दिया, ये नट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है. फ्रूट्स तो बिल्कुल छूता तक नहीं. द चाइल्ड इज नॉट टचिंग द फ्रूट्स. सो व्हाट विल यू से about this? Interest कैसे लाना है? That is what the technique they should apply, the parent. Thank you, sir, for this question. So nowadays this is becoming a major issue in each and every family. So I think the main reasons is to expose food, fast food and junk food. So how they will get interest in homemade food? Exposure of fast food and junk food industry, ये तो हमारे सामने है. तो हम लोग एडिक्टेड, टीवी एड है, चिप्स है, कुकीज है, चॉकलेट्स है, तो बच्चे लोगों के सामने आप लाओगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना. एंड फ्रॉम द वेरी अर्ली फेज हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, उनके हाथ में एक चिप्स का पैकेट पूरा दे देते हैं. सो व्हाट विल यू से? एंड थोड़ा कुछ टिप्स, डूज एंड डोंट्स हम लोगों को बताइए. गिव सम डूज एंड डोंट्स, गिव सम एग्जांपल्स आल्सो एट द एंड इन फ्यू बेंगली वर्ड्स दैट की करबो ना, but mostly you say for the normal people in English and Hindi. Thank you. Thank you, sir. So today I am highlighting some do's and don'ts for mothers that they can remember easily. So I am coming to the do's. So first of all, number 1, you should shift your child from feeding to eating. Number 2, you Feeding to eating means just I am giving a brief of that. Feeding to eating, what do you mean? Feeding मतलब जबरदस्ती खिलाना, that is force feeding. हाथ में थाली लेके घूमना, बच्चे के पीछे घूरे खवानो. So वो आप बोल रहे हो feeding. And eating मतलब self, खुद खाना. So that is eating. Okay, come to the next second point. Second point is that time management and food gapping is also very much important. And so if you can say in brief, थोड़ा एग्जांपल देके बोलिए in Hindi and Bengali, that time management মানে আমরা কি বলবো? টাইম ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে রোজ আমরা একই সময় খাওয়াবো. মানে আজকে আমি ব্রেকফাস্ট করাচ্ছি সকাল 9টার সময়, কালকে আমি দুপুর 12টায় গিয়ে বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করাচ্ছি, এটা নয়. আজকে আমি 9টায় খাওয়াচ্ছি মানে কালকেও আমি আমার বাচ্চাকে 8:30 থেকে 9টার মধ্যে খাওয়াবো. মানে টাইমটাকে ঠিক রাখা. আর ফুড গ্যাপিং মানে ওকে, হ্যাঁ, টাইম এন্ড টাইম টেবিল. এন্ড দেন ফুড গ্যাপিংটা হচ্ছে যে আমার
দুটো মিলের মাঝখানে অ্যাটলিস্ট 2.5 থেকে 3 ঘন্টা গ্যাপ দেবো। এর মাঝখানে যদি আমি বাচ্চাকে কিছু খাওয়াই, দেন অনলি ওয়াটার, আমি জল দেবো খেতে। গুড, তাহলে বাচ্চার খিদে পাবে, রিয়ালাইজেশন অফ হাঙ্গার। ইয়েস, রিয়ালাইজেশন অফ হাঙ্গারটা হবে বেবি। আর নাম্বার 3 হচ্ছে ইউ শুড অলওয়েজ চুজ হেলদি ফুড আইটেমস অ্যান্ড দেন প্রিপেয়ার অ্যান্ড সার্ভ দেম ইন অ্যান ইনোভেটিভ ওয়ে দ্যাট ইউর চাইল্ড ক্যান ইজিলি অ্যাট্রাক্ট। মানে আমরা খাবারটাকে এমনভাবে প্রেজেন্ট করব না, সেখানে আমরা ফ্রুটস রায়তা দিতে পারি, আমরা সেখানে মিল্ক শেক দিতে পারি একটা স্ট্র দিয়ে, যাতে বাচ্চাটা খুব এনজয় করে খায়, যাতে বাচ্চারা খুব এনজয় করে সেটাকে খেতে পারে। এরকম কিছু ইনোভেটিভ ওয়েতে আমরা হেলদি ফুড সার্ভ করব বাচ্চাদের। অ্যান্ড নাম্বার 4 হচ্ছে ইউ শুড হ্যাবিচুয়েট ইউর চাইল্ড দ্যাট দে এনজয় দেয়ার ইটিং ইন ডাইনিং এরিয়া। বাচ্চারা ফ্যামিলির সাথে একসাথে বসে আনন্দ করে খাবে, সেই সময় তাদের হাতে কোনো রকমের ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট থাকবে না, যেটা তাদের জন্য খুব হার্মফুল। And number 5, the main thing is that atmosphere. The atmosphere should be pleasant and peaceful. যখন বাচ্চারা খাবে তখন সেই চারপাশের অ্যাটমসফিয়ারটা যেন খুব সুদিং থাকে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, কোয়ারেল, এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো যেন অনেক একদম না সময় হয়। দেখি বাচ্চাকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাড়ি দেখিয়ে অনেক হইচইয়ের মধ্যে খাওয়ানো হচ্ছে, বা চারপাশে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, বাচ্চাকে টেবিলে না বসিয়ে মা ওকে আলাদা করে ঘুরে ঘুরে খাওয়াচ্ছে, এবং মা আলটিমেটলি ডায়েটিশিয়ানের কাছে এসে কমপ্লেন করছে যে মাই চাইল্ড ইজ টেকিং টু মাচ অফ টাইম, 1 hour 1.5 hour टाइम, बट दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ द मदर। मदर थिंक्स दैट जितना मैंने लिया है प्लेट में उतना ही मुझे खत्म करना है, ऐसा तो नहीं है। बच्चे को आपको रियलाइजेशन ऑफ हंगर कब हो जाता है? जन्म से हो जाता है। द चाइल्ड क्राइज टू ब्रेस्ट एंड द मदर ब्रेस्ट फेड द चाइल्ड। मगर कब बिगाड़ देते हैं? जब फोर्स फीडिंग शुरू हो जाता है, बच्चा फेल्स टू रियलाइज देयर हंगर सिग्नल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस, and this is a very important topic and very nicely you have highlighted with points 1 2 3 4, so I like it very much. And now if you can say few don'ts about the child, or if you have to say anything about this topic. আমরা বাচ্চাদেরকে 3 বারের বেশি জোর করব না খাবারের জন্য। ওকে, আমরা 3 বারের বেশি জোর করব না। তারা যদি মুখ থেকে ফেলে দিচ্ছে বা খেতে চাইছেন, not to force, না, we should request, we can request, we can sit together and eat, but even we should not force again. Yes, Shahli, next. Yes, now I am coming, these are the do's, and now I am coming to the don'ts. So number 1, do not give your child, that I previously said, that do not give your child any electronic gadgets while they are eating. This is very harmful to them. And number 2 is that stop force feeding, that sir previously discussed very nicely. And number 3, do not give any rewards or punishment for eating. Always try to maintain a neutral attitude for your child. As a parent, always maintain a neutral attitude for your child. Yes, so these are my tips. Thank you so much, and in a very short span of time you have nicely. Now coming to Suparna, again the next phase, that is the adolescence. So Suparna, in this pandemic time, it is becoming very much difficult for all the child, because they are very much stressed out. They cannot meet their friends, they are not going outside, they do not have any scope for outdoor games. So and also the nutrition are getting compromised, because they are sitting idle in front of their electronic gadgets, doing their online classes, and they are giving, even they don't know TV computer ke samne classes ho raha hai, aise khana khate ja rahe, so they don't know what they are eating. So how to manage this situation? Thoda tips agar aap kuch batayenge to, few tips about this scenario. Yes, sure. Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आज का सिनेरियो है कि पैंडेमिक सिचुएशन में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो विटामिन डी का एक डेफिशिएंसी हो रहा है एंड होने का चांसेस बढ़ रहा है. एंड इन दैट केस वी कैन मेक देम at least have some sun bath 10 to 15 minutes thrice a week is and what should be the timing of that? From 11 a.m. to 3 p.m.
So it That is is the best. possible, Suparna. Sometimes the If mother will you say that take- online classes है सुबह, तो आप भी 3 बजे को ले जाओ ना, अभी 2 बजे के बाद आफ्टर लंच ले जाओ, एटलीस्ट आप भी जाओ। दोनों क्लासेस के बीच में जो गैप होता है ना, हाँ, उस टाइम पर बच्चे so को टहल वहीं के पे आओ, बिठा के, just go हाँ ছাদে जी, গিয়ে একটু হেঁটে এসো, so you can do yes, that. Yes, very yes. nice point you have highlighted. We Yes, can utilize that. इसमें स्क्रीन से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, तो उसका स्ट्रेस भी थोड़ा सा घट जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में उसको स्ट्रेस फील नहीं होगा। and posture defect भी नहीं होगा ना, एक जैसे हम लोग हर टाइम टेबल चेयर पे बैठा हुआ है, so that is will correct it. Yes, and if possible, involve the child during cooking and choosing the food to be cooked that day. If it is prepared as per the child, and if the child or the adolescent girl or boy makes his or her own choice about the food, and talk about how to make it, and if possible, engage the person to cook the food also, the person gets Yes, interest we can involve, right? choosing Because they are what grown is up. Now we yes, can yes, involve in cooking also. yes, So they yes. will They can find some choose their interest. on their own what to eat, Yes. and we What can to educate them what is good and educate what is bad. They can choose what to choose. them. So we Right. can give them a little liberty in that. And as per the junk foods and online delivery services, we can make those foods in a healthy and tasty way in our own home. That will be more encouraging, and in that case family members के साथ time भी spend हो जाएगा, सबके साथ बैठ के खाना भी खा पाएंगे, तो उनका anxiety, depression ये सब का chances भी घट जाएगा, तो उनका life enjoyable हो जाएगा। तो Mani, in you are saying instead of bringing some food from outside with the help of Swiggy, Zomato, etc., yes, so we can cook together. We can we have can a cook family together, we can picnic eat type of thing. together. That is, Yes, सब मिलके खाना, सब मिलके cook करना, सब enjoy करके yes. खाना खाना, see movies, सब Seriously, मिलके Chohili has अच्छा, well explained Shaili that as well बच्चे explained that. जब Yes. बिठा के खाना खिलाओ, तो वो जब बच्चा है तो वो कुक नहीं कर रहा है, लेकिन वो सबके साथ बैठ के खाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि फैमिली फूड हैबिट क्या है, हमारा फूड ट्रेडिशन कैसा है, तो ये भी उसको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई गैजेट्स उस वक्त हाथ में नहीं होगा, अगर वो कुक कर रहा है, तो he can use YouTube, he can see some recipes online, but he is not engaged in screen. He is particularly focusing on the cooking, and in that case there will be some distraction from the screen also. So जब खाना खाने बैठेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैंने बनाया या फिर हम लोगों ने मिलकर बनाया, तो कैसा है, तो रिएक्शन देखने के लिए वो स्क्रीन पे नहीं जाएगा, वो सबके साथ बैठकर खाना खाने में इंटरेस्ट फील करेगा। तो इन दैट केस दैट इज अ गुड ऑप्शन कि ये अगर करते हैं तो उनका भी हैबिट शुरू हो जाता है कि वो इन फ्यूचर जनरेशन वो भी ऐसा ही करेगा। तो ये एजुकेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लाइक अभी बच्चे का ओबेसिटी बढ़ रहा है तो उसको एक्सरसाइज कराना है, तो ऐसा नहीं है, पहले से ही अगर हम उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने का चांसेस था, जो भी Very good. डिजीज होने का चांसेस था, तो वो घट जाएगा, उनका डिप्रेशन का चांसेस घट जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी भी घट सकता है। ऐसा भी नहीं है सुपर्णा जी, हम लोग अभी फ्रेंड्स लॉकडाउन चल रहा है, घर से नहीं निकल सकते, घर से प्रॉपर मास्क एंड हाइजीन एंड एवरीथिंग हाइजीन मेंटेन करके मेंटेन थोड़ा करके थोड़ा वॉकिंग के करके लिए निकल जा सकते सकते हैं, हैं, थोड़ा वॉकिंग खेलने कर के लिए सकते जा हैं सकते हैं, और जी। जाना होगा पेरेंट्स को साथ में लेके, बिकॉज दे आल्सो आर वेरी बिजी, सो ऑल वर्क फ्रॉम टुगेदर होम थ्री इज ऑफ अ देम आर मोर ऑफ द huge pressure to them, ह्यूज प्रेशर। because they are also work from, they are doing, both of the parents are working, so they have huge pressure, but still quality time is very important, so they can go outside दे कैन and they शेयर देयर थॉट्स एक आल्सो। चीज याद आया मुझे, जस्ट वी कैन हैव सम इंडोर गेम्स that reduces our stress, like कैरम, लूडो, जो हम लोग पहले खेलते थे, आजकल तो बंद ही हो गया वो सब खेलना, so that also reduces our stress. फैमिली गेम्स, देयर And आर if you लॉट्स ऑफ can गेम्स। focus something on the nutrition part, that is what are the food, because mothers are very keen, because they are also prone to develop covid, बच्चे लोगों में भी covid हो रहा है, यस यस, so अभी तो हम लोग क्या 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 खाने में कुछ टिप्स दे सकते हो जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? फर्स्टली तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनता है, अगर यस, बच्चे को वेरी सही से न्यूट्रिशन जन्म से मतलब बिफोर प्रेगनेंसी अगर मदर का न्यूट्रिएंट्स ठीक रहता है तो बच्चा हेल्दी होता है। उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से हुआ है तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होता है नेचुरली। तो उसके बाद अगर विनिंग फूड सेफ एंड क्लीन फूड दिया जाता है तो बच्चे का वहीं पे भी इन्फेक्शन नहीं होता है, अच्छे से इम्यूनिटी डेवलप करता है। और अगर एडोलेसेंस में आकर कर भी बच्चे का इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं तो उनको एडिक्वेट प्रोटीन के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि उनको सिर्फ दूध 1 कप या फिर 1 ग्लास दूध हमने पिला दिया बच्चे का न्यूट्रिएंट्स मिल गया, ऐसा नहीं होता है।
दूध इज फाइन, दूध दो या फिर छेना, दही, लस्सी कुछ भी चलेगा, लेकिन उसमें ज्यादा शक्कर मत डाल के। दही इज फाइन, छेना इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ अगर वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सही से प्रोटीन के साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी देना है। लाइक ऑल फूड ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड। अगर उसको किसी चीज से एलर्जी है तो उसको एक्सक्लूड करके बाकी के सारे खाना वो खा सकता है। अगर वो सीरियल्स है तो अगर उसको चावल या फिर रोटी या फिर ओट्स या फिर क्विनोआ जो भी पसंद है वो खा सकता है। उसके साथ उसको दाल दे दीजिए तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी हो जाता है, मतलब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन का इक्विवेलेंट हो जाता है, कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन तो अंडा दे सकते हैं, फिश या चिकन दे सकते हैं, डिफरेंट रेसिपी में दे सकते हैं। यस, दे सकते हैं। हम साग वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि उसका अभी जो मूवमेंट कम है तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अभी से शुरू ना हो, इसीलिए थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, इससे उसको विटामिन ए, कैरोटीन भी मिल जाता है। कलरफुल वेजिटेबल्स यूज करेंगे तो जो बायोफ्लैवोनॉइड्स होता है वो भी आ जाता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट और ऑल फूड ग्रुप्स यूज करते हैं तो हर एक फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैल्शियम रिच फूड के साथ हम आयरन रिच फूड ना दें, क्योंकि इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है ना कि सेम रिसेप्टर से ये लोग एब्जॉर्ब होते हैं, तो अगर एक ही चैनल से दोनों एब्जॉर्ब होते हैं तो या तो कैल्शियम जाएगा या तो आयरन जाएगा। मोस्टली कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन आयरन वहां से वेस्ट हो जाता है। तो क्या करना है, अगर आयरन रिच फूड खाना है तो कैल्शियम रिच फूड को अलग से 2 घंटा एटलीस्ट गैप रख के खाए तो अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। तो इन दैट केस अगर हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाते भी है तो अगर हम ऐसे सही तरीके से खाते हैं तो जो भी खाते हैं उसका पूरा फायदा मिल सकता है। और अगर बच्चे को चाय या फिर कॉफी, ये सब टी कॉफी वगैरह ना दे, कार्बोनेटेड बेवरेजेस लाइक एनी कोक और एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स ना बहुत दे, ज्यादा they are addicted. If we तो keep this types of carbonated beverage or soft drinks in our refrigerator, obviously they will get addicted. So जितना ज्यादा junk food, ये तो fast किसी food, के लिए भी अच्छा नहीं होता, cookies, फैमिली में किसी हाँ के लिए फैमिली में किसी के अच्छा नहीं, तो जितना घर पे भी आजकल लोग कम ही आते हैं, सो मत स्टोर कीजिए। अगर मेरा चाहिए सलाह है, डोंट स्टोर एनी ले जंक सकते फूड, हैं। फास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। जी, एंड वन मोर थिंग आई वाज गोइंग टू आस्क सोहेली। सकते हैं घर पे बना के, तो ये यस, सब भी ले सकते हैं। और बच्चे को अगर इन्वॉल्व करते हैं बचपन से कि क्या खाना पसंद है, क्या खाना चाहिए, तो उसको अगर अच्छे से समझाते हैं तो उसका एडुकेशन वही से शुरू हो जाता है कि ये हमारा खाना है, ये हमको ऐसे पकाते हैं, इसको ऐसे टेस्टी हम बना सकते हैं। तो वो वैसे ही टेस्टी स्नैक्स भी बनाना सीख जाएगा, खुद भी इन्वेंट करने लगेगा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन सा खाना अच्छा होता है। तो अगर वो ऐसे सीख जाता है तो सिर्फ उसका जनरेशन नहीं, अगला जनरेशन भी इससे बेनिफिटेड होगा। yes, this is very good take home message you have given to us, that तो we अगर हम can एडुकेट, teach हमारा education. का सेलिब्रेट करने का उद्देश्य यही है कि हम जितने चाहे अवेयरनेस फैलाए और Education. सबको एडुकेट करें। न्यूट्रिशनल एडुकेशन देना हमारा न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। अगर हम पीपल के एडुकेट करते हैं तो वो एडुकेशन लाइफ लॉन्ग के लिए तो फॉलो करेंगे ही, उसके बाद का जो जनरेशन है उसमें भी कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, तो लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, तो हम न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह भी सुनने लगेंगे। तो ये जो प्रेजुडिसेस है, मिथ है, फूड फैट्स है, वो सब घटता जाएगा और हमारा इजी हो जाएगा लोगों को समझाना, ताकि वो भी ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। Very good, Shobana. Thank you so much. And also, I am going to ask the same question to Shoheli, but you have given the answer. Shoheli, that is the fruit juice or fruit. What should we give? And Yes, milk, sir. जितना ज़्यादा, ये दोनों के लिए, adolescents and young children के लिए, क्या बोलोगे आप? What will you say That about? बहुत ज़्यादा milk देते थे ना आजकल, 2-3 glasses of yes milk. sir, yes sir. ফ্রুট জুস के लिए ফ্রুট জুসের জন্য যেটা বলবো যে as we all know that whole fruits are always better than fruit juice, because whole fruit contain healthy fiber that Right. fruit juice does not contain. And So milk. whole fruits and the Yes, yes. whole fruits sugar absorbs in our body at a lower and slower rate. Yes. And our body use it as a direct energy source. Right. And milk, this is a common things among the mothers. Already Shobana said that milk they came very Yes. they are very बच्चे को satisfied. दूध पिला दिया, मतलब दूध Yes. पीना ही है। अगर नहीं है। बच्चे का लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है तो भी उसको दूध पीना है। हाँ, छेना लेता है, दही लेता है, नहीं, सेटिस्फाइड 2 से नहीं है। 3 मम्मा ग्लास अगर दूध बोलते हैं कि पिलाना है। दूध उसको सूट नहीं कर रहा है, दूध पी नहीं पा रहा है, हमारा बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
Yes. कि दूध नहीं Suppose अगर पसंद नहीं करता है बच्चा दूध तो मत And दीजिए, दूध का सब्स्टिट्यूट कभी कभी दीजिए, लस्सी कैसे ना बना दीजिए। बच्चा अपना नाक Yes. बंद करके भी कैसे भी तैसे दूध लेना है, कंप्लीट करो, वैसे तो कुछ इससे भी बच्चे खाना का डिस्गस्ट शौक फीलिंग से भी अगर आता है खाने fulfill. में। जी Yes. ये And cow's milk is only designed for cow. सो हम लोग And उतना ज्यादा नहीं लेंगे, वो हाँ, बैलेंस डाइट के अंदर एक पोर्शन है। have rather 250 to 300 ml of milk each day, milk and milk products like chena, paneer, curd, etc. सब मिला के दे सकते हैं, নট অনলি মিল্ক। হ্যাঁ, বিষয়টা এরকম না যে দুধটাই খেতে হবে। milk is just a food group, not a balanced diet, whole balanced diet. রাইট। তো বাচ্চারা যদি লাঞ্চ না করে তো মায়েরা কি করে, সাথে সাথে এক গ্লাস দুধ দিয়ে দেয়, পেটটা তো ভরে গেল। দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট, দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। And আমাদেরকে 80% ব্যালেন্স ডায়েটও দিতে হবে, জল দুধও থাকে, দিতে হবে। it contain 80% of হ্যাঁ, water. yes, So it is better choice that Shahli you have highlighted about chena and curd. It is better than yes, at least giving 2-3 glasses of milk. Bedtime में एक ग्लास, सुबह उठ के एकदम एक ग्लास लेना ही है, इवनिंग में एक ग्लास, उसके साथ कुछ हेल्थ ड्रिंक वगैरह मिला के बिस्किट 4-5 ठो दे Yes, दिया। sir. One हाँ। thing is there like Horlicks 3-4 and গ্লাস দুধ দিয়ে দিলাম, বাচ্চা কিছু খাচ্ছে না, আমি 3-4 গ্লাস দুধ দিয়ে बहुत দিলাম। कॉमन है कि ये सब कोई भी हेल्थ ड्रिंक कोई भी मतलब हेल्थ ड्रिंक एक लेना देने ही के पहले आप सोच लो उसमें क्या है, कंपोजिशन क्या है, कोई कितना नहीं करता है। कितना ज्यादा शुगर है, अगर एंड देना टीवी का चाहिए एड कि जो नहीं। बोलते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स टीवी में एड्स आता है और कुछ कुछ तो ये बोलते हैं कि आयरन कैल्शियम एक साथ मिल जाता है, लेकिन इसका तो कुछ यूज नहीं है ना, तो इसको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि अगर आयरन कैल्शियम एक साथ है भी तो दैट इज ऑफ नो यूज, तो आप तो यूज नहीं कर सकते, दैट विल बी अ वेस्टेज। तो अगर आप आयरन रिच एंड कैल्शियम रिच फूड को अलग अलग से खाते हैं तो नेचुरल सोर्स से ही मिल जाता है, तो आपको सप्लीमेंट खरीद के पैसे को वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सप्लीमेंटेशन आई एग्री दैट कभी अगर कभी जरूरत मेडिकल पड़ता है, सप्लीमेंटेशन है तो जे वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और द मेडिकल न्यूट्रिशन मेडिकल प्रोफेशनल अगर सप्लीमेंटेशन बोल रहे हैं कि जरूरत the है, child is not getting sufficient amount from the diet or the Naturally. absorption is not happening, that time obviously a good nutrition supplement, balanced nutrition yes, supplement is medical required. supplement should be Health given. drink and nutrition Medical supplement is supplement. different. Yes, thank you. Normal health drink is not good at all. No, As per my I will not say like this. I will rather say that I will not say any company or brand, but I will say that No. उसमें बहुत ज्यादा शुगर हो सकता है, उसमें सकता है। प्रोपोर्शन প্রিজারভেটিভস থাকতে পারে, मॉल्ट ज्यादा हो सकता है, Malt, sugar सो है। ज्यादा बहुत कुछ मतलब प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता है, उसमें कितना इंडियन स्टडीज है या फॉरेन स्टडीज है वो देखना जरूरी है। सो दिस शुड बी एटलीस्ट दे शुड कंसल्ट विद ए डाइटिशियन और ए पीडियाट्रिशियन और ए डॉक्टर, देन दे शुड गिव, अदरवाइज ट्राई टू फोकस ऑन द बैलेंस डाइट। इवनिंग टाइम में एक गिलास दूध की जगह, जैसे सुपर्णा ने बोला इवनिंग इज द बेस्ट टाइम, उन लोगों को थोड़ा बहुत एंगेज करो एंड कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाओ, मे बी अब डिनर लाइट कर दो, डिनर के लिए ज्यादा किचन में टाइम मत बिताओ, मगर इवनिंग में 7, 7:30, 8 बजे एक हेल्दी डिश बनाओ, दैट इज बैलेंस डाइट। सो नाउ कमिंग टू Shinjini Roy Choudhury. So Shinjini and Chandana, we have 1 or 2 more questions with us. So Shinjini, just you have highlighted many things that about the health. Now, how to promote good health for the adults, that is very important. What should be your take home tips? छोटा करके अगर कुछ tips, if you give some tips to the young adults or the adults who are very much busy in their sedentary life, so that will be very important, because to manage the time, to manage their expectation, to manage the family as well as the workplace, so stress is coming in between. So how to manage all the things? So if you can give in some tips to us. Yes, sir. Stress, as you have pointed out rightly. So, stress is actually the root cause of another root cause of all kinds of lifestyle diseases. So, to avoid, we have to manage the stress. So, we can manage. They can actually manage the stress by uh, actually sharing their problem with friends or family, or they can have the quality time with pets, or they can have quality time with family. They have to maintain their sleep pattern during the sleep time, or during just before the sleep time. They should not be on in social media. It actually Yes, affects their sleep. screen time, very Screen important for time all is age group.
बच्चों के लिए and all the adults, you have highlighted a very nice point, Shinjini, that is we should reduce the screen time. Screen time तो हम लोग ज्यादा reduce नहीं कर सकते, this is our office at home. So what we can do, at least before sleeping, so we should try to go to bed early. अभी तो लोग ऐसा होता है पूरा रात ही जगते, 2 बजे 3 बज जाता है, सो दे आर ऑन देयर मोबाइल, क्योंकि वो लोग सोचते उस टाइम में एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत फेसबुक चैट ये सब कर लेते हैं, मगर दैट इज नॉट द राइट टाइम. सो That is एटलीस्ट not 1 hour बिफोर गोइंग टू बेड दे शुड just avoid all the screen, looking at the screen. Yes, and yes, yes. and there are another bad habit. Just before going to bed, some people take tea or coffee nowadays. Very good. This is Coffee, another cause. This is another cause of uprising Hampering- stress nowadays. hampering the sleep. It hampers the sleep cycle actually. Sleeps like They even this sleep, they do not get the right depth of sleep. They do not get the deep sleep, which is actually help in coping up with stresses. Very They another thing they can do to manage stress, they can start meditation. They can listen soothing music, some soothing music, just and the bedtime. Yes, yes. I also just kind promote of my patient. instrumental music, not the exact kind of Song, soft songs, kind of Instrumental, instrumental music, yes, kind of meditation or instrumental, instrumental or like yes. flutes, like very soothing flutes, like very soothing some kind of piano music. They can listen. These are actually What very will you much say about helpful meditation? for. What will you Yes, say about meditation? They can yes. I have pointed out meditation. They can have meditation just after waking every up, day because wake up. every day. Because at the beginning it is difficult to concentrate during Yes, meditation, yes, but day by day, they are trying to concentrate. Then their meditation, their pattern of meditation will be improved, and meditation definitely helps in managing stress. right. They can increase their family time. They can talk with their spouse. Actually, they can talk with their children. In this way, their children's stress also can Managed. also can be managed, and their stress can be managed somehow. They can have pet. They can actually Have some incorporate some hobbies. Some hobbies. gardening. That is a few plants. Yeah, When the hobbies. new flower is blooming in your balcony, Exactly. your stress gets reduced. Yes, So sir. Yes, sir. this is a very Exactly. important thing. It So is very this is a very important. nice. If you kindly just write, we have shortage of time, so I want to request you to highlight some of the dietary tips also. So what should be their evening snacks, because they are going in the evening to have some, same as Suparna said, samosa, kachori, or junk food, fast food, Swiggy, Yes. Zomato. So all the day, what should they do? A balanced diet from the start to the dinner. Obviously, it is customized. That what is Obviously. Pritha said, that it is tailor made. Obviously. The thing which fits you will not fit Not me. everybody's need are same. Just as a sample, what should you say? What types of food? I want to say about the types of foods, about the fat groups, protein groups, types seeds, consumption of oil. food. Yes, types of food. Bolte, I can say that they must avoid junk food. Actually, in this evening time, most of these adult people go for Zomato or Swiggy or some kinds of junk food like samosa, kachori, whatever. That is actually their mind refreshing time and mind refreshing food, they think it. So avoid junk food, rather try to incorporate some kinds of healthy food, like they can incorporate healthy and tasty like chicken salad. They can have kinds of nut salads like Different some stuff, boiled parathas, different stuff. kinds of stuff paratha, different kinds of nut salads, and different kinds of soup they can have. Right. But of course, definitely avoid the ready to cook soup from market. Okay. You have to make it in Made your it own, at and in your it's a totally homemade food. If you incorporate in your daily habit homemade food, exercise, and the proper meal gapping, not the very frequent meal, not over gapping, the proper meal gapping if we maintain. And another one point I want to highlight, that
tends to forget to take water or fluid. Yes, very, very important. People tends to actually forget to take water or fluid, and in case of in the name of fluid, they take very frequently tea or coffee. This is very much dangerous Dangerous. for them, very much Yes. dangerous, because most of the people, because nowadays there is a trend to follow that I drink green tea. No, Yes. this is not. Green tea is healthy, but everything has negative points. You Negative have points. Yes. to, yes, you Timing is have to, important. timing is Everything is. important and the quantity is important. Whatever you are eating, whatever you are taking, it obviously has some positive effect, has some negative effect. Negative effect. And whatever is actually affecting in your health, that is only you can ask a proper professional and he or she can guide you. So don't go for the Google or YouTube media. Don't be flooded with there are so much information. There are so much It will make you contradictory confused. information. It will There are make you so much confused. contradictory information. Right, That's right, why right. people get stressed out. So Mm. actually, you just monitor your health. Whatever I have talked, whatever I have stated in my previous speech, that go for some test yearly or half yearly, do it, and touch keep touch in your healthcare provider, because Exactly. only he or she can guide you properly and avoid any kind of bad lifestyle habit, whatever I have said. And take fluid adequately, and fluid actually in form of water, not in the Only form for of market like market available juice or market cold available drinks or juice, not that. cold drinks, And tea, coffee, eat and some. yes, this Yes. kind of food. Thank you. Thank you so much. And next, coming to Chandana. So, Chandana, this will be our last question to you. Again, the geriatric age group. So, malnutrition is very common in the geriatric people, and the chances of Yes. infection, they developed infection very soon. So, what will you say? How to cope up with this type of problem? Infection Actually, से sir, कैसे कम कर सकते हैं? And malnutrition is very important because I am giving you one example. The mhm, person which is already malnourished, sometimes due to some reason, is getting hospitalized yes, due to some anything. And when there also we do the nutrition screening in the hospital, and we find the malnutrition, the person is already malnourished, so it will be very difficult for the doctor to treat that person if the person is, if the geriatric person is already malnourished and being admitted to the hospital. So properly nourished, well nourished is very important. Then they will get discharged from the hospital very soon. They can come back to home very soon, and less chance yes, of yes, infection. Yes. Overall, what will you yes. say about this topic? हाँ, yes, that is very important actually for infection. मतलब ओल्ड एज में आपको सबसे आगे जो चाहिए वो है कंसल्टेशन विथ योर डाइटिशियन, बिकॉज अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें काम भी नहीं करना चाहेंगे. अगर Right. आपको पता है कि अच्छा इसलिए मुझे हो रहा है ये सब, तो आपको उस पे मतलब क्योर होने का जो एक इच्छा है ना वो भी बढ़ जाते हैं. जो प्रोसेसिंग है उसमें भी आप इंजॉय करोगे. तो Right. आपको पहले तो कंसल्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे उसके पास जाइए, बातें कीजिए, तो वो भी आपको अच्छे से मतलब समझा देंगे कि किस लिए आपको इन्फेक्शन हो रहा है. मेनी तो एक्चुअली इन्फेक्शन होता है ओल्ड एज में ज्यादा, क्योंकि उस टाइम सम देयर आर सम कोमॉर्बिड कंडीशन like diabetes, renal failure, arthritis is very common, and also their immune system does not work properly at that moment. एंड ये जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, फिर ये डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये मिलके आपको मोर प्रोन टू इन्फेक्शन बना देते हैं. तो ये है मेन रीजन, बट इंडिविजुअल का तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रीजन होता है. तो ये आपको सबसे आगे तो एक कंसल्टेशन जरूरी है, सबसे अच्छा क्योंकि लगा आपका अगर ये बात. डॉक्टर, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, आपको एक बार कंसल्टेशन में जाना ही है. एंड यस वंस यू एट हैव लीस्ट टू यू गो. शुड विजिट डाइटिशियन. You should correct your food pattern, timing, what you are eating, is it right or wrong? Don't think that if you are going to a dietitian, she will completely or he will completely change your food pattern. जो आप यस खाते हो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाने से मे बी
बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है आपके हेल्थ में। yes, सो yes. और कुछ कुछ आपको वो हमको अच्छे गलती से ये मतलब दे कैन मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल यू नीड, आपको क्या चाहिए और किस लिए चाहिए, ये भी आपको इसलिए बोल देंगे ना, तो आपको भी वो करने में मतलब वो सप्लीमेंटेशन अगर आपको चाहिए होगा, आपका कुछ yes, I want to अलग। ask you that any supplementation is required in this age or not? Micronutrient or macronutrient, whatever. What do you think? In general, सप्लीमेंटेशन, हाँ ये I am सप्लीमेंटेशन not तो saying any disease specific supplement. I am saying if the person is overall in general any. obviously if people are not fulfill their requirement by their foods, then they need supplement, and it will be more important for them because ऐसा होता है, मैंने ये अपने फैमिली में भी देखा है कि जो रैंडम पीपल होता है ना, जैसे आपको ये हुआ है, ठीक है, एक विटामिन बी का सप्लीमेंट ले लीजिए, और वो ऐसे करते हैं कि एक एक टैबलेट और एक कैप्सूल से ही एकदम आप ठीक हो जाएंगे, यू विल बी एब्सोल्युटली राइट। और देयर आर सम पीपल, बट ऐसे आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है कोई रैंडम पीपल से या आपका नेबर से, ऐसे सप्लीमेंट आपको नहीं चाहिए। आपको सप्लीमेंट तब चाहिए जब आपका डाइटिशियन आपको रिकमेंड करे, आपको एक कंसल्टेशन होगा फर्स्ट, देन आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको ये लगता है उस टाइम, अगर डाइटिशियन को ये लगेगा कि यस यू हैव सम, आपको चाहिए होगा कुछ सप्लीमेंटेशन या विटामिन का, मिनरल्स का, जो जिसका भी हो, देन वो आपको प्रोवाइड करेंगे एंड देन यू कैन टेक इट। अदरवाइज सप्लीमेंटेशन अगर उस टाइम लगेगा भी तो वो आफ्टर कंसल्टेशन ही आप ले सकते हैं, ऐसे Very ही खुद जाके ले लीजिए, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट मोमेंट सम पीपल थिंक ना, देयर इज अ lots of confusion about supplementation. Some yes. people also think that supplementation is very bad, they have to consume only healthy foods. Yes, if you can fulfill your requirements It with is not healthy bad food, or good, we will say, but obviously we should promote yes, a balanced diet, a good healthy diet. That yes. we should promote. Then No, no, obviously, some people yes. are said that no, आपको कुछ सप्लीमेंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ हेल्दी फूड ही खाइए, आपको फूड से ही Okay, सब okay. मिलेगा। Neighbors or ऐसा भी, some हाँ, relatives. ऐसा भी होता है ना। तो कभी कभी Okay, अब okay, I आपको understand. फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए, यस यू Yes, कैन गो yes, फॉर yes. सप्लीमेंट। Obviously, अगर आपको हाँ, गैप है, healthy aging, हम्म, we say a term is healthy aging. एज तो सबका ही यस, होना है, मगर आपको हेल्दी यस, एजिंग में जाना है। इट वही इज वेरी हमको याद रखना है कि हमको हेल्दी सबको एजिंग। होगा ये, हम बीमार इस पड़ना टाइम नहीं पे है हमको, जितना यस, कम बीमार पड़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। सबको तो टुवर्ड्स दैट इज वी आवर टॉपिक इज टू टूम, सो मदर्स टू नाउ वी आर अप्रोचिंग आवर एज। सबको एक दिन यस, जाना भी है, बट हेल्दी रह के जाना है। सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव, and thank you once again, Chandana. So थैंक यू I, सर। before closing the program, I want to give one line I want to listen one line of take home message from your own topic. So just follow me if you are there. So give a take home message for the pregnant mother. Everybody just give one take home message, that what you will say before we close the session. Yes, sir. My take home message will be the pregnant woman should follow the doctor and the dietitian's thing and always take a balanced diet during her pregnancy time and not to hear what others are saying or what her family members are saying. A Thank you balanced so diet should be there. Yeah, thank you so much, Paulami. Preetha, can you give a take home message? Yes, sir. I would like to say that before taking care of the child, please take care of yourself. Eat well, sleep well, take enough fluids and calories. And breast milk is the nature's best gift to an infant. Please do not hold back or choose any alternative. Go with the nature's way. That's all. Okay. Thank you. Thank you, Preetha. Preetha and Paulami, keep your video on. So those who are just giving, we should keep all our videos on. So now coming to Shupona. Shupona, about adolescence, what should be your take-home message? Yes, sir. For adolescents, we can say that balanced diet is the best thing. Try to eat homemade, balanced, and tasty foods also. Not every time you need to choose healthy and compromise taste. So, healthy foods can be tasty. Try to make it in your own way. Shoheli, what should be your take-home message?
My take-home message For the is that kids. give for the kids that give them a healthy balanced diet for their growth, and also give them a healthy environment for Very, growing happily. very good. Shinjini? Thank you. Yes, sir. My take home message actually towards the adult, that is बिजी तो आप रह सकते ही, ऐसा तो कोई बात नहीं है, आप बिजी नहीं रहेंगे, बट think before think about family, think of yourself, because if you can be well, then you can keep your family well. So don't panic, don't get stressed, and don't be so much careless about yourself. Take care properly, take care of yourself, take care of your family. Thank Chandana? you, sir. Thank you so much. Yes, sir. So my take-home message is for the family member of the old people, because Right. उनको ही चाहिए समझना, अच्छे से समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, ये नहीं करना है. So main thing is we have to keep them happy. Happiness is the best medicine, best diet for them. We have to keep them happy and try to never go against them. So I think that is the main thing That's the about the best take geriatric home nutrition. message for. So Thank thank you. you everyone. And my take home message is take a balanced diet, take adequate sleep, reduce your stress, be engaged in your hobbies and quality life, reduce the salt, sugar, that is refined flour, junk food, fast food, and spend lot of time with your family, have good amount of fluid, stay healthy, stay safe. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Thank you, sir. everyone. Thank you, everyone. Thank you, sir.